भी बनाओ जल्दी, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ये डायग्राम भी बनाएंगे। Well, dear students, the topic is distance, displacement, speed, velocity. Suppose this is your home and I have mentioned its entry gate by point H. H is the doorstep of home, and here it is your school building and its gate is mentioned by S. Have you seen I have drawn a magenta color line? That is the path by which you can go from home to school or school to home. ये एक रास्ता दिखा रखा है बेटे। आप घर से स्कूल जाते हो सुबह और छुट्टी के बाद स्कूल से जाते हो घर, तो दोनों रास्तों की लंबाई चाहे जाते वक्त चाहे स्कूल आते वक्त बराबर होती है। ये जो मेजेंटा कलर की लाइन हमने ड्रा कर रही है, जो जिसको टीचर ने पाथ लिखा है या ट्रैक लिखा है, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। मान लीजिए आप घर से स्कूल की तरफ आए तो घर को बोलेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। और मान लीजिए आपको स्कूल फाइनली पहुंचना है तो इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। गॉट इट? एक बात और बताऊं, जहां से बंदा अपना मोशन शुरू करता है उसको अनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। अनिशियल, जहां पर बंदा अपना मोशन खत्म करता है पहुंच के, उसको टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं। ओ ये जो मेजेंटा कलर का ट्रैक लेंथ बना रखा है, इसकी जितनी भी लंबाई होगी उसको डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हुआ? लेंथ ऑफ एक्चुअल ट्रैक फॉलोड बाय द बॉडी। सभी बच्चे लिखेंगे व्हाट इज डिस्टेंस। एवरीबॉडी, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल ट्रैक फॉलोड बाय बॉडी इन मोशन। बॉडी इन मोशन। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो पाइथागोरस का एक बच्चा है इंद्रजीत सिंह, पाइथागोरस में उसका ये घर है और वो यहां से स्कूल पहुंच गया। उस बच्चे ने क्या करा, पूरे रास्ते में एक रस्सी को ऐसे छोड़ता आया, रस्सी को बिछाता आया। वो पूरे रास्ते में जितनी रस्सी, यहाँ रस्सी का एक किनारा रखा और इधर दूसरा किनारा रखा, फालतू की रस्सी को काट दिया। फिर इस रस्सी को सीधा करा, जितना भी उस रस्सी की लंबाई होगी उसको माप लिया और डिस्टेंस कहा जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर डिस्टेंस को किस यूनिट में मापेंगे? याद रखना हमेशा, डिस्टेंस को मीटर यूनिट में मापते हैं। यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर। इसको स्मॉल एम से लिखते हैं मीटर को। ओके, दूसरी बात आगे सुनो। मान लीजिए मैं उस इंद्रजीत बच्चे को पूछता हूं, बेटे
डिस्टेंस किधर से किधर को होता है, घर से स्कूल की तरफ या स्कूल से घर की तरफ। वो बच्चा बोलेगा सर डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, चाहे आप इधर से इधर माप लो चाहे इधर से इधर माप लो, दोनों में से कुछ भी माप सकते हो। और इसीलिए टीचर ने डिस्टेंस के ऊपर एरो नहीं लगाया। जिनके ऊपर एरो लगाया है उनकी डायरेक्शन होती है, जिनके ऊपर नहीं एरो लगाया उनकी डायरेक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब बच्चा बोलेगा सर डिस्टेंस के ऊपर आपने एरो नहीं लगाया, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं कहूंगा नहीं होती, नो डायरेक्शन, डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन। दूसरी बात, फिर मैंने उस इंद्रजीत बच्चे को पूछा, मान लो आप घर से स्कूल पहुंचे, आपको टाइम लग गया इतना, टी टाइम लग गया पहुंचने के लिए, तो टाइम को किस में मापेंगे हमेशा, सेकंड में, मिनट में नहीं मापना, आवर्स में मापना, सेकंड में। उस बच्चे ने मेरे को टाइम बता दिया, तो मैंने क्या करा, ये जो डिस्टेंस था जिसको मैंने डी मेंशन कर दिया, देखो डी मतलब एच से लेकर एस तक की दूरी, तो डी मान लिया, और कितना टाइम लग गया टी, डी को टी से डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं स्पीड। सभी बच्चे नोट करें, स्पीड, यानी कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड जिसको कि डी लिखेंगे अपॉन टाइम टेकन। सभी बच्चे नोट कर लें, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। कोई बच्चा मेरे से पूछे सर स्पीड की डायरेक्शन कौन सी होती है, मैं कहूंगा इधर देखो हेडिंग के ऊपर क्या मैंने एरो लगाया, नहीं लगाया सर, जिसके ऊपर एरो नहीं लगाया उसकी डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब सभी बच्चे बोलेंगे सर डिस्टेंस की भी नो डायरेक्शन होती है, होती नहीं, और स्पीड की भी नो डायरेक्शन, स्पीड हैज नो डायरेक्शन। स्पीड की डेफिनेशन क्या बनेगी, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करा, कितनी दूरी, पिंक वाला रास्ता कितना लंबा है उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लग गया। तो डेफिनेशन क्या बनती है, जब भी किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वर्ड लगाते हैं रेट, RATE। इसलिए स्पीड की डेफिनेशन क्या बनी बच्चे, इसको लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू, सभी बच्चे लिखें, स्पीड इज डिफाइंड एज, speed is defined as rate of change of distance, rate of change of distance। सभी बच्चे डिस्टेंस को क्या लिखा था, लेंथ ऑफ द एक्चुअल ट्रैक फॉलोड बाय द बॉडी इन मोशन। अगर कोई बच्चा बोले सर इस स्पीड को किस यूनिट में मापना है, तो मैं बोलूंगा बेटे स्पीड की जो यूनिट होती है इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है वो होती है ये मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं MS की पावर -1, MS-1 ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब टीचर ने इस पूरी डायग्राम में अपने बच्चों को दो चीजें समझाई, डिस्टेंस समझा दिया और स्पीड समझा दी, दो समझाई। अभी दो बाकी हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी अभी समझाऊंगा मैं आपको। जिन बच्चों को इतना समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, जिनको ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड। नाइपर, नेपियर, नेपियर से पूछ रहा हूं, जिनको ये समझ आ गया ओके डाउन। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा था, लेट ज्वाइन करा था, एक बार मैं फर्स्ट जल्दी से समरी कर दूं। एक बच्चे का घर यहाँ पर है होम, और उसका स्कूल है यहाँ पर, और वो ये रास्ते से मैजेंटा कलर की जो लाइन है स्कूल घर पहुंचता है, घर से स्कूल तक। इस मैजेंटा कलर को हम पाथ बोलेंगे या ट्रैक बोलेंगे या डिस्टेंस बोलेंगे, तो इसकी जितनी भी लंबाई है यहां से यहां तक उसको डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ द एक्चुअल ट्रैक फॉलोड बाय द बॉडी इन मोशन।
इस ट्रैक को फॉलो करने के लिए कितना टाइम लग गया? स्मॉल टी। टाइम को सेकंड यूनिट में यूज करना है। सेकंड का सिंबल होता है एस। और डिस्टेंस को मापने के लिए यूनिट होती है मीटर। मीटर का सिंबल होता है एम। तो कितना डिस्टेंस कवर करा कितने टाइम में? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसको स्पीड बोलते हैं। इसी फार्मूले को अगर वर्डिंग में लिखते हैं तो डेफिनेशन बन जाती है स्पीड की। स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड होती है तो रेट वर्ड जरूर लगता है। स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर आप मेरे को बता सकते हो इनमें से किसके पास इंटरेक्शन होती है कि नहीं होती, तो मैं कहूंगा बेटे ये देखो, डायरेक्शन का चार्ट बना रखा है मैंने। एक तरफ लिखा है यस, एक तरफ नो। जिनकी डायरेक्शन होती है यस, यस, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। इसलिए टीचर ने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लगा रखा है डायरेक्शन वाला। फिर वो वेलोसिटी के ऊपर। कोई बच्चा बोलेगा सर लेकिन ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होते क्या है? अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। और एक चीज और देखो, जिनके ऊपर एरो नहीं लगा रखा, कौन कौन से? डिस्टेंस। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो लिख रखा है देखो टीचर। और स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। ओके, नोट कर लो सारे बच्चे, किसकी डायरेक्शन होती है किसकी नहीं होती। सभी बच्चों को इसका इसको अच्छे से लिख लेना चाहिए जो पॉइंट नहीं आता आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए अब हम दूसरे दो पॉइंट सीखेंगे। कौन से वाले? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, उनको सीखेंगे। शाबाश एवरीबॉडी, बी रेडी। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो देखो इसको कैसे सीखेंगे बच्चे। मान लीजिए मैं इसको नई डायग्राम बना के अपने बच्चों को समझाऊंगा। मान लीजिए बेटे इसके अंदर मैंने इतने पार्ट को इरेज कर दिए। डिस्टेंस हमने समझ लिया, जिसको टीचर ने समझा दिया उसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो इस डायग्राम को भी मैंने हटा दिया। स्पीड भी हमने समझ लिया, हटा देते हैं इसको। और ये जो भी हमने समझ लिया उसको हम सारा हटा देते हैं। ओके, अब हमने समझना है इसी डायग्राम में वेलोसिटी, और क्या समझना है बेटे? डिस्प्लेसमेंट। शाबाश, इसको समझो। देखो हमने क्या बोला था, टीचर ने बोला था कि मान लीजिए यहां पर आपका घर है, स्टार्टिंग पॉइंट होम, इसको हमने बोला था स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग को इनिशियल पॉइंट भी बोलते थे। ओके, अब हमारा असली रास्ता कौन सा था स्कूल पहुंचने के लिए? यह वाला था, जिसको टीचर ने मैजेंटा कलर की लाइन से दिखाया था पिछली डायग्राम में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो बेटे मान लो आपको उड़ना आता है, अगर आपको फ्लाई करना आता हो पक्षी की तरह, तो आप अपने घर से स्कूल कैसे आओगे? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर फिर तो हम, अगर उड़ना आता है तब हम स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे, ऐसे उड़ के आ जाएंगे। यस, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको एस से लिखते हैं बच्चे। सभी बच्चे याद रखें, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जो होगा, दूरी कम से कम दूरी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर कम से कम दूरी हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी।
उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लिखो सभी बच्चे, डिस्प्लेसमेंट it is the straight line gap, it is the straight line gap comma between initial and final position of body in motion, बॉडी इन मोशन। सभी बच्चे लिख लें, सभी बच्चे लिख लें। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है, ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ ही होती है। अगर हमारा स्कूल फाइनल पॉइंट है, सुबह सुबह हम स्कूल आते हैं घर से, तो इसका मतलब है हमारा ये फाइनल पॉइंट है। क्या चीज? स्कूल। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर को होती है? इट इज ऑलवेज directed from starting point to terminal point। कोई बच्चा बोलेगा सर टर्मिनल पॉइंट कौन सा होता है? तो मैं बताना चाहूंगा फाइनल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। गॉट इट? कोई बच्चा मेरे से पूछे सर डिस्प्लेसमेंट को मापते किस में है, यानी कि बच्चा उसकी यूनिट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट। एसआई का मतलब होता है सिस्टम में इंटरनेशनल। सिस्टम में इंटरनेशनल का मतलब है पूरी दुनिया में 200 से भी ज्यादा कंट्रीज को ये मानना पड़ेगा कि हम नॉट। ओके बेटे, मैं लिखवा देता हूँ, फिर आप लिखो डिस्प्लेसमेंट। सभी बच्चे मैं इसको क्लियर भी करवाता हूँ और वर्डिंग में बोल देता हूँ। इट इज द स्ट्रेट लाइन गैप बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इन मोशन। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये बताया। ओके, अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर दिखे। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लग गया, टाइम, तो मैं बोलता हूं टाइम टेकन, मान लो टी है, टी। और एस का क्या मतलब है? एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब फिर वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? सभी बच्चे याद रखें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। सभी बच्चे लिख लें, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ओके। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर वेलोसिटी को कौन सी यूनिट में मापते हैं, इनका यूनिट क्या है, यूनिट, तो मेरे को बोलना पड़ेगा बेटे वेलोसिटी को मापने के लिए जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और सिंबॉलिकली उसको लिखते हैं ms⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड। इसका इंटरनेशनल यूनिट है एसआई यूनिट। सभी बच्चे लिख लें, वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी का फार्मूला है कौन सा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। यानी हरी लाइन, हरे रंग वाली जो लाइन है, ग्रीन कलर लाइन, उसकी कितनी लंबाई है उसको डिवाइड कर दो टाइम से। कौन सा टाइम? जो घर से स्कूल पहुंचने में लगा उस टाइम से डिवाइड कर दो। इसी को अगर वर्डिंग में लिखें तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी क्या?
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। शाबाश। सभी बच्चे अगर मेरे से पूछना चाहें कि सर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वेलोसिटी की? तो वेलोसिटी की डेफिनेशन सभी बच्चे लिखे। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी बेटे? योर टेंशन। सभी बच्चे लिखें वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सभी बच्चे लिख लें वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। m/s। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड। बोलने में क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकेंड। तो कोई बच्चा मेरे से पूछे सर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है? यस, यस, वेलोसिटी हैज डायरेक्शन। वेलोसिटी हैज डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन होती है। कोई बच्चा पूछे सर इसकी डायरेक्शन होती कौन सी है? इसकी डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की होती है। और डिस्प्लेसमेंट की क्या थी? स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो आप लिखोगे वेलोसिटी, शाबाश सभी बच्चे, इज ऑलवेज डायरेक्टेड। वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन डायरेक्शन है। लिख लेना चाहिए। सभी बच्चों को ये भी याद होना चाहिए कि स्टार्टिंग को इनिशियल भी बोल सकते हैं और फाइनल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। टर्मिनल। इस तरह से वेलोसिटी के बारे में हमने बात करी। अब आपको कुछ कन्वर्जन चार्ट भी याद होना चाहिए। शाबाश। कन्वर्जन चार्ट लिखो सभी बच्चे। कन्वर्जन चार्ट सारे बना लो जल्दी से। कन्वर्जन चार्ट कौन सा? आप मेरी मदद करोगे अगर आपको पता है। कौन बच्चा बताएगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कौन बच्चा बताएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कौन बताएगा 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? कौन बताएगा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? कौन बच्चा बताएगा मेरे को 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? कौन बताएगा बच्चा मेरे को 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट? कौन बच्चा बताएगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कौन बताएगा 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? शाबाश। ये आपने देखो कोई है बच्चा जो बता सकता है? कौन बच्चा मेरे को बताएगा 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितने बाय कितने मीटर पर सेकंड होता है? है कोई बच्चे जो बता सके इनको? कोई भी आता हो आपको? यहाँ कितना लिखोगे? शाबाश। कौन बच्चा मेरे को बताएगा 1 यार्ड में कितने फुट होते हैं? कितने फीट? कौन बताएगा बच्चा मेरे को 1 फीट में कितने इंच होते हैं? कौन बताएगा 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अब मैं इनकी वैल्यूज लिखने लगा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देख लें इनकी वैल्यूज। 1 माइल, सभी लिख लेना ध्यान से। 1 माइल इज इक्वल टू 1.61 किलोमीटर। सभी लिख लो, जल्दी करो। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। आगे लिखने लगे हैं हम, ध्यान से देखो। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। फिर से देख लो, 5/18 मीटर पर सेकेंड। और देखो शाबाश, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। 3 फीट। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। 12 इंचेस। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 2.54। लिख रहे हो ना बेटे नेपियर के बच्चे, शाबाश। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। पूरा रट्टा लग जाना चाहिए आपको। एक और लिखो, 1 डेकामीटर। डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। एक और लिखो, 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। 1/10 मीटर। सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि जहां पर टीचर ने सीएम लिखा है उसका मतलब है सेंटीमीटर। जहां पर टीचर ने केएम लिखा है उसका मतलब है किलोमीटर। जहां पर टीचर ने एमएम लिखा है उसका मतलब है मिलीमीटर। नोट कर लो जल्द से जल्द। अब हम बात करेंगे असाइनमेंट पे। सभी बच्चे असाइनमेंट खोलें। ओपन योर असाइनमेंट। Please open your assignment and read the first question. Read the first question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? मैं ये चाहूंगा नेपियर में से लवनूर सिंह। लवनूर सिंह फ्रॉम नेपियर, प्लीज कम ऑन द माइक। शाबाश बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो आकर। माइक के ऊपर रीड करो फर्स्ट क्वेश्चन। आजो आजो, शाबाश। माइक को ऑन करेगा नेपियर का स्टूडेंट और फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेगा असाइनमेंट का। कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे, शाबाश। बैठो बेटे, हमें बता रखा है 54 किलोमीटर पर आवर को
हमने कन्वर्ट करना है कितने मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, सभी बच्चे ध्यान से देखो, सारे बच्चों ने ऐसे लाइन लगा देनी है, नीचे हम रफ वर्क करेंगे, ऊपर सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे सभी बच्चे देखें, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे 54 किलोमीटर पर आवर कैन बी रिटन एज 54 इंटू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। इसी चीज को लिखने का नया तरीका देखो, ऐसे लिख देना है। फिर आपके टीचर ने क्या याद कराया था, अभी अभी टीचर ने याद कराया था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और टीचर ने यह भी कराया था 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ये वाले हमें काम में लेने पड़ेंगे। अब बच्चा कहता है सर इतने सारे आपने फार्मूले लिखाए थे, मेरे को कैसे याद रहेगा पेपर में कि इसी का फायदा लेना है। मैं कहूंगा बेटे यूनिट देखो कौन सी है, मीटर। तो पहले कौन सी यूनिट है, किलोमीटर। तो किलोमीटर से मीटर में जाने वाला, किलोमीटर से मीटर में जाने वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब अगले स्टेप में मैं लिखूंगा 54 इंटू 1000 मीटर। फिर एक देखो, मेरे को आवर से किस में जाना है, सेकंड में जाना है। तो आवर से सेकंड वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं नीचे लिखूंगा डिवाइड करके 3600 सेकंड। तो गौर से देखो मीटर पर सेकंड आ गया अपने आप। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। कैसे सॉल्व कर दूंगा, एक जीरो कट गया, दूसरा जीरो कट गया, तो ऊपर बन गया 54 इंटू 10, और नीचे बन गया 36 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को मैथ आता है, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं 18 के टेबल से, 18 के टेबल से या 9 के टेबल से इसको कट कर सकते हैं। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 10 आ गया, और 2 और 10 आपस में कट जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया ये 15 मीटर पर सेकंड। देखो टीचर ने इन दोनों कन्वर्जन फैक्टर्स का फायदा लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया। जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। पाइथागोरस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए मेरे को एक बच्चा चाहिए, हरनेक जैन। ना 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 ना, हरनेक नहीं है, हिमांक जैन है बेटे, हिमांक जैन। नेपियर, प्लीज कम ऑन द माइक। हिमांक जैन, रीड दी सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, Convert 10 meter per second into kilometer per hour. शाबाश बेटे। 10 मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है कितने किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने यहां पर लगा दिया लाइन, नीचे हम करेंगे रफ वर्क। कैसे करना है सभी बच्चे ध्यान से सुने। सबसे पहले हम 10 मीटर पर सेकंड को लिखने का तरीका बदलेंगे। कैसे करेंगे, 10 लिखेंगे, इस मीटर को लिख देंगे इंटू 1 मीटर, और जो डिवाइड कर रहा है उसको नीचे लिख देंगे 1 सेकेंड। इसको लिखने का तरीका बदल दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो हम यहां पर 1 मीटर की वैल्यू लाकर पुट करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। हमारे टीचर ने हमको ये करवा रखा है, क्या चीज करवाई है, हमारे टीचर ने कराया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। लेकिन मैं इस किलोमीटर की वैल्यू नहीं पुट करनी, मेरे को तो मीटर की पुट करनी है।
तो मेरे को यहाँ भी थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 मीटर कर दिया। अब मेरे को 1 मीटर की वैल्यू चाहिए, ये 1000 को लेफ्ट साइड पर जाकर डिवीजन में चला जाएगा। इसका मतलब हो गया 1/1000 किलोमीटर। देखो नीचे चला गया, इस 1 को उस 1000 ने डिवाइड कर दिया, 1/1000, और उधर अकेला 1 मीटर रह गया। 1 मीटर, इस 1 मीटर की वैल्यू हम यहां से लाकर इसमें पुट करेंगे, यहां से ऐसे पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको पुट करूंगा, सभी बच्चे देखो क्या बनेगा। 10, 1 मीटर की वैल्यू ये रखी, 1/1000 ब्रैकेट, और ये किलोमीटर लगा दिया। नीचे अभी भी 1 सेकंड है, तो इनको आपस में डिवाइड कर देंगे हम। ये कितना हो जाएगा बेटे? ये बनेगा, इनको आपस में कट करेंगे, एक जीरो कट जाएगी, 1/100 किलोमीटर, और नीचे अभी भी सेकंड है। तो हम इसको आंसर नहीं बोल सकते, क्योंकि टाइम हमें आर में चाहिए, आर में। तो मेरे टीचर का दूसरा फार्मूला मेरे को कन्वर्जन फैक्टर काम आएगा। मेरे टीचर ने सिखा रखा है 1 R = 3600 सेकेंड। मेरे को यहाँ पर 1 सेकेंड की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट आई विल डू, 3600 को नीचे लाऊंगा, 1 सेकेंड बना, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा। तो ये बन गया हमारा 1/100 किलोमीटर ऊपर, 1/3600, यहाँ आर बन जाएगा। और जब डिवाइड अपॉन डिवाइड अपॉन डिवाइड 3 बार डिवाइड आ जाए, तो सबसे बॉटम वाला सबसे ऊपर चला जाता है बच्चे। तो 1 × 3600, और ये दोनों इकट्ठे होकर नीचे आ जाते होते हैं। 1 × 100 डिवाइडेड, ये सारा सॉल्व करके आ गया हमारा 36 किलोमीटर पर आवर। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। इनवर्स proportion क्या होता है? अपने terms याद तो नहीं। I was good in maths, very good, but कभी terms। ये असाइनमेंट आप प्रैक्टिस करके आओगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Hello everyone, good afternoon. I'm sure you people are almost done, and I'm giving you another 2 minutes, 1 minute to relax, 1 minute to put your things away. And ये कौन सा room है without the camera? Hardy, please give me your camera control. Are there any children sitting on this side? Well, I'm unable to see the whole class. Middle row is prominently visible. Rest everything is like, I don't know. Okay. So I am sure. Have you put back your science sheets? Put away your science sheets. This is the English sheet. If you all have, please. Where is the pen? Okay. So today we are going to do. Is everyone ready for the class? You can take 1 more minute, and when you're ready, I just want you to show me your hand. Okay. So articles.
So you all know this, okay? I'm sure you all know. First, you write A whenever the noun has a consonant sound, okay? When it is every other letter except A, E, I, O, U. And comes before the vowel sound, and T, the comes before specific things, okay? When thing is, we are pointing to one specific thing, okay? Or something which is unique in the world. Something which is like, the names of the cities, the names of the movies, the names of the books, like something very specific, okay? When we are pointing to something very specific. So today we are going to start with, if you have seen your this thing, you will be like, I'm sure you people are very excited to do this. This is the exercise you're going to do. You have to, there are three options given, A and the, and one fourth, which is a cross. Okay, that means you're going to make a cross. So this cross is going to go in places in the blanks where it is not required, where A and the don't fit. Okay, where a and the don't fit. So you're going to start doing the first one. Let us start. I can start. My mother is an English teacher. And okay, because this is vowel sound. So normally when you have a vowel sound, you write and. Okay, this I know you, everybody knows this. I am, okay, Hardy House, center row, first when this girl. I am I am a what? I am a student, because this has S has which sound? Consonant sound. Okay. So, and vowel sound, a consonant sound, student. Okay. Next. When I get home from school, I watch. Yes, Richardson. I watch programs on TV. Yes. Cross, I watch. cross will come. Yes, very good. Perfect. Cross. Now, you will wonder why we did not write the, because I said specificity, specificity, specific cheesing. Like if it was like, I will watch the cartoons, I'll watch, like, not I'll watch cartoons thing. If you have some specific, like Tom and Jerry, particular name, okay, or a particular name of a program, then it would have been the. Okay, then it would have been the. But here it is programs is like any program. So no specificity. It is not pointing to any specific thing, any one thing, any unique thing. That is why we will not have the here. Very good, very good. Next, that's blank the best part of my day. Specific part of my day. Yes, Richardson, for middle row, first bench, the girl on my right. You can come. That is the, that is. The Yes, that is the. Okay, because we are pointing out to one part of the day, one specific part of the day. So that is the best part of the day. Okay, of this child's day. I watch, I watch I watch, I will write here, okay? I watch
So I watch. यहाँ पे क्या आएगा? Who will? Okay. Napier House. On my right, there is a girl in white t-shirt who has raised her hand. Come out. Yes. On my right. Yes. On my right. Napier House. But there is only one girl who raised her hand. Why is she hesitant? Okay. Anyone else? Yes. Yes. Do come out. I watch. Yes, Napier. I can't. Which I could not hear you. I watch. Ma'am, Huh? there's some cross. What? Cross. Cross. Okay, anybody else who thinks there should be another answer? Richardson. Richardson. The boy on my, thank you, beta. But I don't agree with your answer. Okay. Richardson on my left, the boy who's sitting in the end. I watch. Very good. Now comes the big confusion. यहाँ भी the है. Okay. We have the here. Why we don't have the here? Programs हैं. Because see, specific program. Which is the specificity of this program? That they are for children. Point it out. यहाँ पे I watch programs. Any program. We don't even know. Okay. Here it is specified. I watch the programs that are for children. Specific. The programs that are for the children. Okay. So that is why the programs that are for children. I watch the programs. Now, next. I am, okay, Napier, on my left, red t-shirt, there is a boy who's sitting by the window. Yes. I am, Ma'am, very good. I am a child. Again, CH, C is a consonant sound. So I think they are funny. Okay, probably, when we watch age appropriate things, we like them. Sometimes, older people or adults will think, ye kya nonsense, but children love it. Okay, so this kind of thing. Now, someone from Pascal House, come forward and read the whole paragraph. The first one. Come forward and read the whole paragraph. Okay, that boy who's standing in the middle row. Aajo. Chalo. Okay. Read out. Read out the whole paragraph. Let's see how it sounds. Okay. So one thing I'm sure everybody is clear about is, although it is the same word, but when you read the sentence, you have to see whether it is for specific reason or it is just a general reason. General thing or specific. So accordingly, you will put this. Okay. अब अगर आपने देखा होता प्रोग्राम सब में यहाँ पे अ लगा दिया होता क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है. Okay, so we have to see exactly what it is. Don't blindly do anything. Clear? This thing I wanted to clear it. Yes. My mother is an English teacher. I am a student. When I get home from school, I watch programs on TV. That's the best part of my day. I watch the programs that are for children. I am a child, so I think they are funny. Very. Okay. I watch programs that are for children. Clear? So here, specified all children, general. Okay, not one particular child or something. Okay. Now, let's come to the next one. Next one. Let's come to the next one. Who will answer me the first one? Okay, Napier House. On my left, last row, yellow t-shirt child. I am. Should I remove this? Because we need this blank board now. Oops. Ma'am, Ma'am, class. One Yes. new article.
In the Ma'am, no article. let me read the paragraph. I haven't read it yet. Okay. The paragraph is, I am Ma'am, no article. no, there will be an article. I am a little. Thoda sa. A little means I am a little. Thoda sa excited. I am a little. Little. Okay. You have to understand. I am a little excited because it's. Why I'm excited? Because it's blank Friday. Who will answer this one? I am a little. I haven't put the main word excited because it's. Who will write down? Okay, very good. Richardson, middle row, a girl sitting in the back who has raised her hand. Aja. Yes, the one who's turned around and looking. Middle row बोल रही हूँ बेटा मैं middle row. There are only 3 rows. One to my left, one to my right, and one in the middle. Ma'am, clock. Very perfect. Nothing will come because this is, what does this means? It means it is. So when you read, I am a little excited because it is Friday. We don't need any article here. Okay, very good. Next, there are blank lot of good shows on TV. I think so. This child loves TV. He's in love. Pascal House. Okay, middle row. Third bench. That little boy who's standing. Yes, third bench, middle row. You just stood up. There are Ma'am, very good. There are a lot of good shows. Okay, on TV today. So this child is totally absorbed by TV. Okay, Napier. There are 2 boys who have raised their hands. Like I think so many. One is on my right, second last bench. Ab bhi aa jao. One is on. There are 2 boys on my left. One in red T-shirt and one in right. So you also come. Each one of you will tell me one. Okay. Blank one. I usually why the because it is telling about one. Yes, it is telling about one specific program. The one I usually watch. Okay, it's pointing towards one specific program. So the blank, like the one I usually watch is at 3:30. It's about. It's about. It's about. What will you write here? Perfect. Because it is about animals. You don't need anything there. And it is again like, there's no need for anything. So it is about animals. Very good. Also, I am excited today because my mother is making blank rice for dinner. Okay. It is, I'm also excited because my mother is making blank for dinner. Okay. Richardson, first row, the girl on my left. Aja, on my left.
Cross will. Very good. It's making rice for dinner. You don't need anything here. So this is how when you read a paragraph, you start understanding. Okay. And in the first paragraph, there were programs twice, but in one program there was given, in one nothing. Okay. So this is how you have to take care of it. Blindly नहीं, अगर फर्स्ट वाले में द लगाया तो सब में द लग जाएगा, या अ लगाया तो सब में अ लग जाएगा. No, nothing like that. You have to see the context, you have to hear. Okay, you have to listen to the sound of this word, and then how in context it is, like, it is going, how in context. So accordingly you have to do this. Okay, now I'm sure you will be able to do the rest of the 4 by yourself, because I want to finish what is given at the back, and then we can come back if we have time. We'll come back on this. Okay, because this is now you have understood, and you can do it, and we can discuss it in the next class if you want. And if we are able to do, we can do it today also. Okay, there is no problem here. Now see, when you come back here, okay, okay. So now everybody read out the indefinite articles a and an. Do you think you understand? Okay, this is what I was trying to make you understand right now. Try this indefinite article exercise. Okay, this is a very, very interesting exercise. Helpful hint. As a rule, you can remember that abbreviations or acronyms that use and start with these letters. Okay. Now see, you know what are abbreviations or acronyms. Okay. Everybody has come across. You have all come across this, fanboys? Yes, you know? Okay. So they are like F is for, A is as, N is not, B is but. Okay. They are coordinating conjunctions. Okay. So here. So this is, we can call it abbreviation, or we can call it like they are acronyms. N-Y, acronyms. They are called acronyms. One more. Okay. Here. Anybody knows what is this? Anyone? There are so many students sitting. Yesterday, a child could tell me what it was. You don't know? ISRO? ISRO. If you don't know this, it's really bad. Yes. Yes, Richardson, the girl sitting in the first row, middle row. Aajao. What is ISRO? How? Yes, Richardson, please come out. Okay. Ramanuja. Ramanuja, middle row, first bench. Aajao. What is ISRO? And where is it? In India? Ma'am, it is an Indian space company. Indian Space Research Organization. Okay. It is Indian Space Research Organization. Okay. ये सबको पता है? ये पता है किसी को? Very bad. I must say it's not a good sign. See, our general knowledge is very important. ये नहीं पता CBI. Okay.
I can see a hand raised. I'm so impressed. Okay, Pythagoras, on my right, there's a boy. Now he's trying to hide. Okay, I could see one or two hands. Okay, Pascal. So many. Suddenly, so many. Sudden ट्यूबलाइट सबकी जल गई हाँ एक साथ. Okay. On my right, the girl who has raised her hand, first girl. आ जाओ. जल्दी आओ. Why are you confused? You raised your hand. I'm telling you to come. That girl. Stop wasting time. Central Bureau Investigation. Central Bureau of Investigation. Okay. So these are like for crime scenes. This is a very important branch of our police system. Okay. And it takes care of Central Bureau of Investigation. One more. This everybody should know because I'm sure अगर ये भी नहीं आ रहा तो बहुत ही अच्छा. NASA. How many of you have heard about this? And where is it? Is it in India or is it in some other country of the world? Okay, Ramanuja. Whoever can answer this, I'll really give you a big hand of applause. Yes, a big round of applause for you. Okay, the boy who's raised his hand in the first row, Ajo. Come. Come. Middle row, first bench. जिसको आने आ जाओ. Both of you. National American Space Agency. Okay, National Aeronautics. Okay. Aeronautics. Yes, National Aeronautics Space Agency. Very good. Maybe he tried and I'm happy. He got like half right. So these are all acronyms or abbreviations. Abbreviations are like, and how acronyms are formed? They form by taking the first letter, ISRO. Okay, I is taken from here, S is taken from here, R is taken from here, and O is taken from here. Now, how do you put like, A or an in front of them? You will see, and these are the letters. If your agency starts with, if this acronym or abbreviation starts with these letters, then you have to put what? It's given here. As a rule, you can remember that abbreviations or acronyms that use AND start with these letters. They start with A, E, I, O, but not U. Okay? And you have other from the consonant F, H, I, L, M, N. Okay? So this you have to remember. I don't know how you want to remember it, but you have to remember it. Okay? Then you come to this next. Now I have given the pronunciations on the side. After going through the pronunciation, you will make a decision whether it is going to be a or an. Okay? In this. Whether it is going to be a or an, you will not do it otherwise. Come on. I wanted you people to understand this because otherwise, if you will blindly start following, okay, this is this, let me do it, it won't work. It doesn't work. Okay. So first one, this is blank home. This is blank home. See the pronunciation. It starts with home. Home. Okay. The sound is consonant. The sound is a consonant sound. Yes. Yes, Hardy House. Aja. This is this is a home. Because, okay. Now I'll just add one thing. Honest. Tell me. इसके आगे अ आएगा एन आएगा और क्यों आएगा? You have to give me the reason. Okay.
Napier House, I can see a hand raised at the back, last bench, middle row. Ajo, come. Come. Faster. What will you write? Why? What will you write? And Why and? Yes, you are right. Yes. Why will you write? यहाँ पे हमने H पे A लिखा है, यहाँ पे हम H पे N लिख रहे हैं. Why? because H is silent. Because H is silent. Okay, so the sound starts from here. Honest. Okay, it starts with the vowel sound. Honest. Okay, H is silent. Honest. That is the reason. Now quickly do all these. Okay, my brother is an honest. Actually, an honest person is missing there. You can write yourself. My brother is an honest person. Okay, an honest person. Okay, next. Paul is blank. Now see the pronunciation. See the pronunciation. Okay, Pascal House, middle row, third bench. Okay, on my one of you can come. Paul is, see the pronunciation, how it starts, with a vowel sound or with a consonant sound. F is like, you know, is, if you see it's a consonant, but what sound? Yes. Paul is an FBI agent. Very good. He is an FBI agent because the pronunciation is F, A. A is E, like the vowel sound. FBI agent. Okay, and you have to remember these for acronyms. You can use these letters. When you use, it is always. Then John is blank, unique man. Okay, John is blank, unique man. Who will come? This would be like a real, when you have really cracked it, you will not go wrong anywhere. Okay, on Napier House, on my left, that girl in yellow t-shirt, last bench. She's been raising her hand for a long time. Okay, very eager and keen. Very nice. More students should participate. Okay, participation is the best way to learn. N आएगा. क्या आएगा? N. N आएगा? Yes. Okay. See, who will? I don't accept it. And who will come here? Have you seen the pronunciation, beta? Bache, have you seen the pronunciation? Okay. Richardson. Why are people not raising hand in Pythagoras? Not a single child has given me the answer yet. Anyone? Okay. Pythagoras, this girl who has raised her hand on my left. Please come out. Ajo bache. You just raised your hand and then you pulled it down. आएगा. अब मुझे बताओ क्यों आएगा? इसको हम कैंसिल. हाँ. Why? ये तो vowel. It is a vowel. A-E-I-O-U. And why are we putting here? This pronunciation and JCM. Yes, because the pronunciation, don't say pronunciation, it is pronunciation. Pronunciation. Everybody has to repeat this 5 times in your mind. This is how you will keep improving your pronunciation. Okay, so the pronunciation here is Jew. It starts with the J sound. Okay, unique. And sometimes for you, we also have a sound U. Okay, this is the sound. So this is the sound. That is why the sound is like that. So it is a unique man. Okay, and with you will have to do a lot of hard work because you may bahut. You never write an university. You write a university. Okay, or the university if it is specified which one.
Universe. You never write a universe. You always write the universe. Okay? Or an universe. No, you always write the universe because it's specified. So this is how you'll have to go about it. Unicycle, unibrow. Okay? Unibrow होते हैं when लोगों के यहाँ से जुड़े होते हैं ना. We can talk about it some other time. Let's finish this. This is blank UN office. UN office. UN office. Okay, I can see the same children raising their hand. No new child. किसी को नहीं समझ आ रहा. Okay, Napier, the boy on my left in red t-shirt. Two boys, one in red, one in white. Both of you come out. Napier. One will answer the fifth one and the other one will answer the sixth one. This is the what happened? उसकी pronunciation देखो. How does the pronunciation begin? It is a UN office. Okay, this is a UN office. Yes, because the pronunciation starts with j, u. Okay. Now next, my father has P. Yes, P sound is there. Answer the boy who was the other boy. Yes, is a PhD. Because see the pronunciation. So basically, why I have given you this exercise, because I want you to always remember that in future, whenever you do this, you have to see for the sound, okay, and the context. Both the things have to be kept in mind. Blindly, कभी भी P से शुरू हो रहा है, blindly A लगा दिया. U से शुरू हो रहा है, blindly N लगा दिया. No, 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 no. Okay, you have to even think in what context it is going, if it is specifying something, and you will have to think about the pronunciation too. Okay, he took blank HIV test. See the pronunciation. H. Okay. Okay, Richardson. Richardson, I can go on my left. There is a boy in the second last bench who's raised his hand for a long time. Yes, come. Yes, the boy who turned around and looked. Yeah, come forward. Jaldi se aao. He took blank HIV test. What? बेटे फिर से देखो, उसकी pronunciation देखो. H, से pronunciation शुरू हो रही है. आप देखो, I have given the pronunciation. It is AYCH. HIV. H. What is this sound? Vowel sound. So you will write and. He took an HIV test. Okay. They have. Abhi one starts with O starts. It's a vowel. Okay. But see the pronunciation. It is like W. It's W. So they have a. Blindly यहाँ पे and नहीं आएगा बच्चे. It will be, yes, Pascal. Middle row, first bench, that boy who's raised his hand. आजा जल्दी से. Very good. Okay, because the sound. So that is why I have given you this exercise, because I want to make things very, very clear with you. I hope you all understood this. Now let's move to the next section. Okay, fill in with the where necessary. Okay, all don't require. I told you specificity, specific things. Okay, so if it is specific, only then the will come. Otherwise, if it is general, generic, then the will not come. Okay, for generic things, no. For unique things, yes. For something you want to point out or some known things, okay, then the will come. So this is the rule applied. Could you please go? I am going to, I'll just erase this. Erasing.
I hope everything is clear with all of you and it won't create any confusion. Moreover, if you ever have confusion and if you ever want to clear it, you can always ask me in the next class. Okay? I'm open to it, to queries and concerns and questions. Okay. Fill in the blank where necessary and put a cross where not. First one, I am going to blank park after school. Okay. Pascal house. I see the same hands raised. I don't like it. I want more children to come forward. ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी, कोई नहीं पीट रहा आपको, कोई डांट भी नहीं रहा, and nobody is judging you. It's okay. But you have to use your logic. Okay? The logical answer देना. ऐसे तुक्के नहीं माने. Okay. So here, many in Pascal house. Let me see. Okay. Okay. Richardson, center row. There's a girl sitting at the back, second last row, second last bench. Please come forward. Please, yeah, the turn. When I call you, you start looking piche aage. Why? I am going to. Ma'am, Going to. Huh? to the park. Very. To the park. Okay, the park, because she's specifying she will go to some particular park. She's not talking about all the parks. She's talking about one park. Okay, where she wants to go. And probably when she's talking to a friend or she's talking to her mother or brother, sibling or someone, they know where this park is. Okay, because in normal day conversation, when you say, Mom, I'm going to the market, Mummy ko pata hai kaun si market ja rahe ho? Probably one in your vicinity. Okay, so I'm going to the market. To the market, because you know, specific, you have specified where you are going and not like, oh, any market. No, not like that. Okay, next. She's studying. She's studying. Okay. Richardson, on my left, there are two boys who have raised their hand. The first one, yes, Aja, the first one. She's studying. The The biology. Okay, I don't agree with this. Why did you choose the? cross. Yes, cross. But why? She's studying. See, biology is one general. Okay, in biology, there are so many different studies. If it was specified, then we would have put the biology of marine science, the biology of genetics, the biology of animals, that is zoology, that's another branch. Okay, the biology of something or a particular chapter, then it would have been the specific, like something specific. Here it is just a general thing. Biology. She's studying biology. What she's studying in biology, we don't know. Okay. What is she studying? We don't know. It's such a huge, it is like a huge umbrella. Under the biology umbrella, there are like lot of things. Okay. So we don't know. So this is, yeah, she's studying biology. He's reading a book about blank history of Rome. Okay, Napier. Napier House, center row, last bench. Okay, one of you can come. There were two girls who raised their hand. One of you can come quickly. He's reading a book about The history of Rome. okay. Why the? Because history भी तो biology के जैसे एक subject है. ये भी तो biology को आगे हमने cross लगा दिया, but history is also a subject like biology. So why are we putting the here? Socho. Think. Okay, Pascal house. That boy was almost jumping out of the table. आ जाओ. जल्दी से आओ.
Middle mein. Yes, fast. Ma'am, because history of Rome is given, ma'am. In that it is only biology. Here Yes. it is history of Rome, ma'am. That is a particular. Very good. It's biology, beta. Okay, biology. Okay, and this is history. Yes, history. If it was only up, she's studying history, then we would not have the specified that she's studying the history of Rome. Specified. Okay, there are so many types of histories: ancient, medieval, like contemporary history, wars. We are studying about like the 101 genre of history also. So here we are, the history of Rome. That is why we put the here. Very good, very good. I love to listen to blank music. Okay, who will answer this? Pythagoras, aaj tum so gaye? Everybody is sleeping? Get up, one of you, and answer this. Get up. I need to pull out one or two from your group. Okay, center row, first, second, third bench, both the boys get up. One in green t-shirt, one in white. Stand up. Stand up. And don't tell me you can't answer these. Okay. I love to listen to blank music. Huh? What will you put here? Cross or the? Hmm? What will you put here? How many of you say we will put the here? How many of you? Okay. How many of the others say that we are not going to put the here, we are going to put cross here? Yes, we are going to put cross here. I love to listen to music. Okay. Again, music में कितना सारा music है. Music, Indian music, American music, classical music, symphonies, like Western music. Music is a broad umbrella. It's a broader term. Okay, so under it, if you would have specified, I want to listen to Indian classical, I want to listen to something like that, then things would have been different. Okay, so here I love to listen to music. वैसे भी music and art के आगे you never put the. They are like very general term. Now next one. She's going to blank cinema tonight. Okay, Napier, red t-shirt on my left. आजा फटाफट. On my left, Napier, red t-shirt. She's going to Ma'am, the very good because specified. She's going to the cinema tonight because when she's talking to someone or you are telling about her, we know where she's going. Okay, some specific. ऐसे ही नहीं कि कहीं भी जा रही है. Some cinema tonight. Okay, he's going to walk blank dog after dinner. Okay, Richardson. Same children raise their hand. Middle row, first bench. Aja beta. He's going to walk dog. very good. Again, because we know a specific dog. We know उनका अपना pet dog ही होगा. She's not going to take a stray dog for a walk. So she's going to walk the dog after dinner. I love to eat. I love to eat. Okay. Richardson, that boy who just came out. Very good. I want you to come out like this. I love to eat. What do you put here? A crop. Yes, very good. Because apple is a general term. अगर हमने कोई specific apple हो, I'll love to eat this. Like, the Adam, the forbidden apple, which is there in the Bible story about Adam and Eve.
or something, some like, specific. We can also write an apple a day keeps the doctor away. But here, I told you always see the context. Okay, so here she is going to eat she loves to eat apple. She's going to blank beach this weekend. She's going blank beach. Okay. Napier middle row blue t-shirt girl. Come forward. जल्दी से आ जाओ. Very good. When she says the, it is like, going to some particular beach. Okay. I think so. Your time is over. So let me quickly finish this. He plays football every weekend. We put a cross here because football is like a big term. Okay, that means he just plays the game. General. Okay, she enjoys watching cooking shows. Again, put a cross because we don't say specifically like, baking show, like, she wants to watch some particular Indian master chef or something like that, the Australian master. No, we are just saying cooking shows in general. She loves to swim in the sea. Okay, so the rest here, 4 paragraphs, you will do yourself. And if we will discuss it in the next class. Okay. So let me see how well you all do. And I'm sure you people had a good time today and you learned a lot. Okay. Thank you very much for being eager, students. Okay. Have a good day.